Hello everyone. Once again, welcome to my channel. My name is Shiva Krishnan, and I upload videos related to data analytics and its tools such as Excel, Power BI, and AI. So, in case you are new to my channel, I would like to extend a warm welcome, and to the existing subscribers, thank you very much for staying connected with me. ठीक है? I hope कि आप मेरे पुराने वीडियोस को enjoy कर रहे हो, right? And at the same time that you're getting to learn from my content, right? So today's video I'll take take you through this mock interview. Okay, this will be an extension of what we did in the previous video. All right. Now in the last video I had tried with Copilot AI, but in today's video I'll be trying this with Gemini. Okay. So here's the prompt that act as an interviewer for MIS Analyst job role, and I'll be the candidate. Give me scenarios ranging from simple to intermediate, and then at the end of job interview, give me feedback. ठीक है? So तभी ये जो मैंने नया सीरीज लॉन्च किया राइट मॉक इंटरव्यू विद एआई, अब ये ऑलमोस्ट सारे जॉब रोल्स के लिए मैं कवर करूँगा. ठीक है, इंक्लूडिंग दोज रोल्स जिसमें मैंने कभी काम नहीं किया है मैंने. राइट, तो इससे क्या है कि पता चल जाएगा, एंड यू गाइस कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दिस. ठीक है, बिफोर गोइंग टू जॉब इंटरव्यू आप ये प्रॉम्प्ट, जो भी जॉब रोल के लिए मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा, उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके अपने एआई को पेस्ट करके आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, एंड या सो फॉर दोज रोल्स जहाँ पे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो आई विल गिव सम काइंड ऑफ रैंडम आंसर ओनली टू expect that AI to reject me, and then I will ask AI to give me answers and as an expert in interview coach, ताकि आप पूरी तरह से प्रिपेयर रह सको कि रियल इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड so that you can increase the chances of getting selected in the job interview. Okay, so here's a prompt. I hit enter. mm, Gemini AI did not respond, so I'll refresh the page. So let me paste this here. Okay, and now we will start the interview with Gemini. I'm going to drop the microphone down because I'm just going to connect um, my mouse so to my laptop. Give me a moment. Okay, so ये सिनेरियो वाइज Gemini AI ने दिया है. ठीक है, so here's the thing, right? Gemini AI said कि AI analyst will be the bridge between our raw data and leadership team. ठीक है, leadership team का biggest decision. So we need someone who can clean up messy data, build reliable reports, and explain what the numbers actually mean. ठीक है, so यहाँ पे क्या है कि तीन scenarios देंगे. Gemini AI will give three different scenarios, moving from simple to intermediate. So let's start with scenario one, simple data cleaning and basic reporting. So our sales team just sent over their monthly performance sheet, and frankly, it's a bit of a disaster. The region column has massive inconsistencies. Some rows say west, some say west coast, and others say W. On top of that, there are duplicate transaction IDs and missing values in the revenue column. The VP of sales needs a clean summary report showing total revenue by region by the end of the day. Walk me through your exact process. What tools would you use? How would you clean this data efficiently, and how would you handle those missing revenue numbers before building the final report? Wow, okay. Region column has massive inconsistencies. Some say west, some say west coast,
Others say W. On top of that, there are duplicate transaction IDs and missing values in the revenue column. Wow, okay. I'm taking time to gather my own thoughts and then I will do this. Revenue column has massive inconsistencies. Some say west, some say west coast. Okay, I'll say firstly, I'm going to drop the microphone down, okay, so that you can clearly focus on the screen, right? I'll type with speed, and you guys can clearly focus on how I'm giving this interview, okay? Okay, so this is my answer, ठीक है? ठीक है, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सिनेरियो क्या था, क्वेश्चन क्या था इसमें, कि मैं वापस से पढ़ के बता देता हूँ। इसमें क्या है कि सेल्स टीम ने एक मंथली परफॉर्मेंस स्प्रेडशीट भेजा है। इसमें क्या है कि काफ़ी एक डिज़ास्टर हुआ है, एक खिचड़ी बन गया उस रिपोर्ट में, कि काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी है, ठीक है? कई रोज़ में वेस्ट है, कई रोज़ में कुछ अलग ही है, ठीक है? एंड हाँ, पूरा डेटा जो है एकदम काफ़ी मैस है, ठीक है? काफ़ी एक खिचड़ी बन गया है उस रिपोर्ट में, कुछ एकदम ही बकवास रिपोर्ट है वो, ठीक है? तो आप उसको कैसे क्लीन अप करके कैसे बढ़िया रिपोर्ट कैसे बनाओगे, ये तो सिनेरियो, ठीक है? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट की डुप्लीकेट इश्यूज भी है एंड मिसिंग वैल्यूज है। तो मेरा क्या जवाब था इसमें, कि फर्स्ट सबसे पहली बात तो मैं रॉ स्प्रेडशीट को देखूंगा, डुप्लीकेट्स को हटाऊंगा, मैं बेसिक फॉर्मेटिंग करूंगा, फिर वी लुकअप लगाऊंगा, वी लुकअप एज वेल एज एक्स लुकअप टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, एंड उसके बाद एक पिवट लगा के पब्लिश करूंगा रिपोर्ट को, ठीक है? तो उसमें अभी जिमिनाई कहता है कि बिफोर यू मूव टू द नेक्स्ट सिनेरियो आई वांट टू ड्रिल डाउन टू जस्ट bit deeper into your cleaning process. You mentioned using VLOOKUP or XLOOKUP to find the missing revenue values. If those missing values can't be pulled from another table using a lookup, say it was just a human error where someone forgot to type the amount for a unique transaction, how would you handle those blanks? Would you delete those rows, replace them with zeros, calculate an average, or flag them? ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, हाउ वुड यू क्विकली फिक्स द इनकंसिस्टेंट रीजन नेम्स लाइक changing west coast and W to just west, so your pivot table doesn't accidentally create three separate categories for the same region? Wow, देखा, देख रहे हो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग से सिनेरियो दिया है, जो कि रियल लाइफ में भी कई दफ़ा होता है, राइट? तो इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर ये मिसिंग वैल्यूज कान बी पुल्ड फ्रॉम अनदर टेबल यूजिंग लुकअप, मान के चलो कि ह्यूमन एरर हुआ है, ठीक है? तो हाउ वुड यू हैंडल दोस ब्लैंक्स? वुड यू डिलीट दोस रोज, कि आप उसको रिप्लेस करोगे ज़ीरो से, या कैलकुलेट एन एवरेज, और फ्लैग देम? तो मैं कहूँगा कि
इस क्वेश्चन को कॉपी करके मैं बोलूँगा कि ठीक है, टू सॉल्व दिस if there are lot of missing values, I will look for numbers in different report and do X lookup accordingly. And that way, missing values can be sorted out. Missing values can be resolved. And ठीक है, उसके बाद changing west coast W, ठीक है, so ये pivot table doesn't accidentally create three separate categories. So इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अ, ठीक है, ये जो inconsistent region names है, changing west coast and W to just west, and regarding, ठीक है, वापस से मैं माइक्रोफोन ड्रॉप कर रहा हूँ, राइट? ओके, once in a while, like I'll be dropping the microphone and then I'll pick up the microphone again while explaining this. ठीक है, so give me a moment here. Regarding, ठीक है, तो अभी ये मेरा ये आंसर तैयार है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है कि मिसिंग वैल्यू से अगर पुल्ड आउट नहीं हो पा रहा दूसरा टेबल से, ठीक है, एक ही शीट के अंदर दूसरा टेबल है, इससे भी अगर नहीं पुल अप हो रहा, क्योंकि कई इंसान ने मतलब वो डेटा क्या कहते हैं, डेटा टाइप करने भूल गया, ठीक है, या फिर कुछ इशू हो गया, तो इसमें एआई पूछ रहा है, राइट? सो एआई इज आस्किंग लाइक व्हाट वुड यू डू? सो लेट्स से इफ अ ह्यूमन हैज forgot टू टाइप द अमाउंट, वुड यू डिलीट द रोज? क्या आप उस रोज को डिलीट करोगे, या फिर जीरो से रिप्लेस करोगे, या आप एवरेज कैलकुलेट करोगे, या आप कैसे करोगे, आप कैसे इसे फिक्स करोगे, राइट? तो मैंने इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा अप्रोच क्या रहेगा कि मैं देखूंगा कि दूसरा कोई रिपोर्ट है, बिकॉज अभी वैल्यूज अगर मिसिंग वैल्यूज अगर ज़्यादा ही है, राइट, रिपोर्ट में, एंड इट बिकम्स वेरी क्रूशियल, तो ऑब्वियस सी बात है वो सिर्फ एक एवरेज अंदाज़ा लगा के काम नहीं चला सकते हो, ठीक है, एंड उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हो, एंड वहाँ पे ज़ीरो भी लगा नहीं सकते हो। सो व्हाट यू विल डू इज विल फाइंड फॉर डिफरेंट रिपोर्ट, एंड देन उसके बेसिस पे और दूसरे रिपोर्ट से डेटा कोलेट करके फिर आप एक्स लुकअप लगाओगे आप, ताकि मिसिंग वैल्यूज़ को आप रिजॉल्व कर सको। And regarding inconsistent region name, I'll find out if they belong to one particular region, for example west, ठीक है, एक west region है या कौन सा region है, then select them and keep one name as west so that the issues is getting resolved. क्या west region है? तो इसको मैं explain करता हूँ मैं। Let's say कि अगर कहीं पे west coast है, कहीं पे W है, कहीं पे सिर्फ west है, तो मैं सिर्फ सारे उन um, उस डेटा को आइडेंटिफाई करूंगा कि डू दे बिलोंग टू वन रीजन एज वेस्ट। तो अगर एक ही वेस्ट है तो बस एक ही स्टैंडर्ड रखूंगा पूरे रिपोर्ट में कि ठीक है, इसको चेंज करके वेस्ट कर दूंगा मैं, ताकि पूरा डेटा में कंसिस्टेंसी रहे एंड पिवट में वो एक ही रीजन दिखाए, वेस्ट, राइट? अब मैं इसको एंटर करता हूँ, लेट्स सी व्हाट एआई सेज।
ठीक है, तो इसमें इसने कह दिया कि ठीक है कि मैं दूसरा रिपोर्ट को देखूंगा, एंड ये वेस्ट को स्टैंडर्डाइज कर दिया मैंने। ठीक है, लेट्स एलिवेट दी स्टेक्स अ बिट। सिनेरियो 2, automation and dynamic dashboards. Imagine you successfully delivered that sales report and the VP was so impressed that they now want a dynamic weekly operations dashboard. Here's the catch. The data comes from three different sources every Monday morning. An automated CSV report from CRM, monthly target list maintained manually by managers in Excel sheet on SharePoint, a live SQL database trackers tracking actual conversions which you can access. The VP wants to open this dashboard every Monday afternoon to see a week over week comparison of actual versus target performance, and they don't want you spending all Monday morning manually copy pasting data. How would you set this up workflow? Walk me through the tools you would choose. Example, advanced Excel features, Power BI, Power Query, and how would you connect and transform these separate data sources to the dashboard so the dashboard updates automatically with minimum manual effort. Wow. Okay. वेल ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैं भी कैसे हैंडल करता हूँ अभी इसको ध्यान देना आप, ठीक है? गिव मी वन मोमेंट हियर, आई एम गोइंग टू ड्रॉप द माइक्रोफोन अगेन। ठीक है, तो इसमें कि तीन अलग अलग रिपोर्ट है, ठीक है? ऑटोमेटेड सीएसवी रिपोर्ट, मंथली टारगेट लिस्ट, ठीक है, जो कि मैनुअली मैनेज किया जा रहा है एक्सेल शीट और शेयर पॉइंट से, लाइव एसक्यूएल डेटाबेस। तो मैं क्या करूँगा, अगर तीन अलग अलग शीट में डेटा है ना, तो एक ही इसमें मैंने पावर पिवट लगा दूंगा ताकि उसको कंसोलिडेट करके एक वन डैशबोर्ड में क्रिएट कर दूंगा फॉर दी वीपी टू सी। ठीक है, तो इसमें कहा कि जेमिनाई ने कहा कि ये एक पावरफुल चॉइस है, बहुत बढ़िया है। एंड सिनेरियो 3, intermediate data integrity and stakeholder management. It's 3 p.m. on a Friday. The CFO is scheduled to present the quarterly financial performance to the board of directors in exactly 1 hour. You refresh the automated dashboard you built, but you notice a major anomaly. The total revenue shown for the current quarter has suddenly dropped by 30% compared to the numbers you verified yesterday. You do a quick investigation and find that a recent system update disrupted the live SQL database connection, causing the last 2 weeks of transaction data to be completely missing from the dashboard. The CFA, the CFO is already on their way to the boardroom and has no idea. Walk me through exactly what you do next. How do you balance investigating the technical issue, verifying the true numbers, and communicating the critical discrepancy to the CFO before they walk into that meeting? Wow. देखो, ये थोड़ा सा एकदम ही कॉम्प्लेक्स दे दिया इसने कि ठीक है, अभी यहाँ पे सिनेरियो ये है कि एक ऑटोमेटेड डैशबोर्ड हमने बिल्ड कर दिया, लेकिन एक मेजर एनोमली है, मतलब मेजर डिविएशन है, इसमें दिख रहा है कि 30% कम है कंपेयर टू दी नंबर्स यू वेरीफाइड येस्टरडे। तो आप इन्वेस्टिगेट करते हो और पता लगाते हो कि सिस्टम अपडेट करते समय लाइव एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्शन टूट जाता है, जिसके कारण uh, 2 वीक्स का ट्रांजैक्शन डेटा completely missing है from the dashboard. CFO is already on the way to the boardroom and has no idea. Wow. I'm trying to gather my thoughts to, again to deal with this. ठीक है,
just like the way you do this in a real interview, right? Give me one moment here.
Now that you've demonstrated you can handle the data, hiring manager or HR recruiter will likely move you to final round. Focus on cultural fit and team collaboration. They will want to see how you interface with non-technical business leaders and how you prioritize a heavy backlog or reporting requests from different departments. To close our simulations officially, do you have final questions for me about the team structure, the data stack we use here, or the typical timeline for our final decision? So, well, I will leave that to मैं कहता हूँ कि ठीक है well let's simulate as a final take. Let's do simulation of that team as well. ठीक है. So this is the last round, right? Imagine that you have made it past the technical screening round and now you're sitting down for panel interview with core people you're supporting every day. Sarah, VP of Sales, who's fast-paced and hyper-focused on revenue numbers. David, Director of IT and Data Governance, who's highly protective of company data security and system scalability. Sarah leans forward. Thanks for coming back with us. Look, my sales team moves incredibly fast and frankly, waiting on IT to build official database views takes weeks, and I want an MIS analyst who can bypass the red tape, build custom automated pipelines for us using the latest AI agents or whatever no code tools to get the job done quickly and get dashboards in front of my team by tomorrow morning. How do we handle a situation where business teams need data now, but standard IT processes are slowing you down? Then David from IT chimes in, crossing his arms. And just to add that from the governance side, any data pipeline built outside our vetted Microsoft Access system or using unapproved AI tools creates massive compliance and data leak risk for the company. If it's not secure and documented, it doesn't touch our production data. You're caught right in the middle of a classic corporation tug of war. Sales want speed, IT demands security. Wow, what a tough round, right? Okay, here Sarah wants speed, okay, and she wants to build an official database views. Uh, yeah, she wants. I mean, Sarah wants this IT official database um, to be done in the fastest possible time. ठीक है. Sarah says कि official database बनाने में काफ़ी time लग जाता है, हफ्ते time लग जाता है, but here she wants done in few days, and she wants custom automated pipeline for us using the latest AI agent or whatever no code AI tools to get the job done quickly and get dashboards in front of my team by tomorrow morning. I will say, Sarah, I have an impressive, thank you, and I have an impressive business intelligence AI agent.
ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेरा का क्या क्वेश्चन था, राइट? शी वांट्स द डेटाबेस टू बी बिल्ट क्विकली, ठीक है, एंड शी वांट्स द ऑटोमेटेड पाइपलाइन टू बी डन विद द हेल्प ऑफ एआई एजेंट। तो इसमें क्या होता है कि मैं भी ये पूरा डेमो दिखा दूंगा, राइट? ऑब्वियसली बिजनेस इंटेलिजेंस एआई एजेंट का जो डेमो है वो प्रीवियस वीडियोस में है, राइट? यू कैन चेक दैट आउट। सो एक लाइव डेमो दिखा दूंगा नाउ। एंड डेविड हु इज द गवर्नेंस, ठीक है, आईटी गवर्नेंस का जो डायरेक्टर है, राइट? He is from the security team. He is from the director of IT and data governance, right? So he wants to make sure that कि approved authorized tools ही यूज़ करेंगे, right? So मैं डेविड को बोलता हूँ कि ठीक है, जब एक बार ऑटोमेटेड ये पाइपलाइन बन गया तो वी विल मेक श्योर दैट कि शीट्स को लॉक कर दिया जाए ताकि अनऑथराइज यूजर्स को उसमें एक्सेस मिलेगा ही नहीं। प्लस आई कैन डू द सेम इन पावर बी आई एंड रेस्ट्रिक्ट बाय यूजर रोल। आई मैं डेमो दिखाना स्टार्ट कर दूंगा, राइट? सो आई हिट एंटर, ठीक है। So Sarah is like, wow, seeing that happen in real time is exactly kind of speed I'm looking for. If we can get that numbers that fast, my team can pivot strategies midday. David leans forward, scrutinizing the screen as he show the role-based security. Okay, I appreciate that you're jumping right into role-level security in Power BI using Excel's data protection. That handles the consumption side well. My main concern is the ingestion side, ensuring those external AI tools and agents are using enterprise-grade security APIs that don't cache our data for public training models. David logs a note on his tablet looking significantly more relaxed. If your AI tools are running on our corporate vetted license like Microsoft Copilot or Enterprise Gemini accounts where data privacy is guaranteed by contract and enforcing errorless, I can support this workflow. So final team round evaluation and feedback. Wow, pulling out a live demo mid-interview to solve the exact problem with the arguing is a power move. It immediately shifts the conversation from theoretical promises to concrete capabilities. So here's why this response। तो एआई ने भी फीडबैक दे दिया कि ठीक है, मैंने परफेक्टली क्या किया इसमें कि डेमो दिखा दिया एंड दोनों पार्टीज को साइमल्टेनियसली एड्रेस कर दिया मैंने। एक को चाहिए था स्पीड, दूसरा को चाहिए था सिक्योरिटी एंड कोई रिस्क ना हो, तो उसको भी एड्रेस कर दिया मैंने, ठीक है। तो सटल पॉलिश ये है कि adjustment in a real world enterprise setting, you want to assure IT team that the AI agents that we are using is within the company's secure cloud tenant like enterprise API wrapper, so the data never leaves corporate boundary. Pair excellent security demo, ठीक है, ये इसने बता दिया कि and David rest assured these AI agents will only run on our secure enterprise vetted API endpoints, so our proprietary data never trains public models. Exactly. So they don't want the data to be leaked to the public AI models, right? They want to be making sure that this is closely vetted, closely safeguarded, so that इनको कोई threat ना मिले data leakage के through, right? So the final verdict is that I'm hired. ठीक है, so you played around with flying colors. He showed technical depth, high-speed problem solving, cool under pressure, and the exact kind of innovative modern AI skill set that companies are desperately trying to integrate into their traditional workflows right now. ठीक है, अभी आपने देखा होगा राइट कि इंटरव्यू कैसे था, रियल वर्ल्ड में भी ऐसी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे। द एग्जैक्ट सिनेरियो इसने दे दिया एंड हाउ आई हैंडल दिस, राइट? सो आई एम wrapping this video, and then I will in next video I'll be trying to do for other job roles as well. Okay, so thank you so much for patiently watching the video. In case you're new to this channel, do hit that subscribe button, wherein एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस टाइप का कंटेंट आपको दूसरे चैनल पे शायद ही मिलेगा आपको। मैं स्किल बेस्ड चैनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।